आर टॉपर्स लाइंग? क्या यूपीएससी में हर साल जो टॉपर्स बनते हैं एंड देन शेयर देयर स्ट्रेटजीज विद द एस्पिरेंट्स ऑन यूट्यूब, क्या वो सारे झूठ बोल रहे हैं? बिकॉज एवरी एस्पिरेंट ट्राइज टू फॉलो देम, बट ऑल ऑफ देम डोंट सक्सीड विद द सेम रिजल्ट्स. एवरी ईयर when the most awaited results of UPSC CSC are announced, new toppers are born. These toppers are felicitated, उनका सत्कार सम्मान होता है. They become celebrities overnight. ये वही टॉपर्स होते हैं जो सिर्फ एक रात पहले खुद अनश्योर होते हैं कि जिंदगी में क्या होगा, क्या दोबारा प्रीलिम्स देनी पड़ेगी, एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे स्टार्ट शेयरिंग सीक्रेट ऑफ देयर ग्रैंड सक्सेस विद द एंटायर वर्ल्ड. लाखों एस्पिरेंट्स लिसन टू देम वेरी केयरफुली, their strategy, their sources, which GS फाउंडेशन कोर्स they joined, कौन सा ऑप्शनल लिया था, how they succeeded, etc. Because somewhere all of them feel कि if I just follow what they did, maybe I can reach where they are today. If it worked for them, it should also work for me. They try hard to follow topper strategy, same books, same routine, same approach, same coaching. And after some time, they realize it does not work automatically. They try hard, they listen to even more toppers, and even then, in 99% cases, it does not yield any better result. Then comes a doubt. Are toppers hiding something? Are they not telling the complete truth? Are they just going for plain lie for instant popularity? Well, not really. They are not lying. What's actually happening is something else altogether. The reality is that most toppers are not fully aware of everything that worked for them. They mention what they can see, their notes, their routine, their sources, their guide. But there are many other things that contributed to their success as well. The way of their thinking, the background, mental process, natural strengths, instincts, habits, but they don't speak about all of this. Either because they don't value it as important, or maybe because they take it for granted, or worse, they are simply not aware of it. उनको एग्जाम के बारे में तो अच्छे से पता है, but खुद के बारे में वो इतनी क्लैरिटी हमेशा नहीं रखते. In terms of psychology, this gap is explained with the help of Johari window. It says simply, there are parts of your personality that you know, and there are other parts of your own personality that you don't know. Toppers share what they know, but in reality, they are not fully aware of themselves. They have their own blind spots. So, even if they are completely honest, they cannot be completely true. Whatever they tell is in such strategy sessions is merely the tip of the iceberg. The hidden part of what made them successful remains hidden from both them and thereby with you. अब aspirants करे तो क्या करें? Should they now start looking even deeper for what was hidden from topper strategy and then try to emulate that as well once again? No. सवाल ये नहीं है कि टॉपर्स ने क्या नहीं बताया. सवाल ये है कि क्या आप खुद के बारे में सब कुछ जानते हो? The real gap is not information, it is awareness. Aspirants keep searching for that one perfect strategy outside, while the real thing lies inside. आप कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ अटकते हो, कौन से मिस्टेक्स रिपीट करते हो, ये सब इस टॉपर के वीडियो में आपको नहीं मिलेगा. प्रिपरेशन एक स्टैटिक प्लान नहीं होता है. इट्स अ फीडबैक लूप. यू स्टडी, यू रिवाइज, यू टेस्ट, यू फेल, you analyze, you adjust and improve, and repeat and repeat and repeat. And most students skip this feedback loop. वहीं पे असली ग्रोथ होती है और वहीं पे गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है. बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट्स खुद से अकेले से आइडेंटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल है. यू कैनॉट सी व्हाट यू कैनॉट सी, एंड ब्लाइंडली इमिटेटिंग अ टॉपर इज नॉट गोना हेल्प. एक कहानी बताता हूँ. एवरीवन नोज Bruce Lee. He was a world-renowned in martial arts, incredibly successful person. उसके पास बहुत स्टूडेंट्स आते थे to learn martial arts, and almost all of them एक ही चीज करते थे. They tried to copy him. Same stance, same punches, same style.
उन्हें लगता था कि इफ दे बिकम लाइक ब्रूस ली दे विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल लाइक हिम। लेकिन ब्रूस ली उनसे एक बात हमेशा कहता था, मेरा स्टाइल कॉपी मत करो, आई एम नॉट हियर फॉर दैट, आई एम हियर टू हेल्प यू फाइंड योर ओन स्टाइल। बिकॉज सक्सेस किसी और की स्ट्रेटेजी कॉपी करने से नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम बिल्डिंग सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। और ये शिफ्ट फ्रॉम कॉपीइंग टू अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग। दैट्स वेयर द राइट गाइडेंस कम्स इन। Come to Level Up IS. On 20th of April, our GS Foundation batch is starting for 2027. Come to us for right guidance from real teachers and senior mentors. You sit with us, discuss your strategy, and chart out a proper plan. Because your preparation, your success cannot be built on incomplete understanding. Thank you.